So this is the paper that we're doing today. This is May-June 2022 paper 4 variant 2. If this is the first time you are on my channel, you can have a look at a number of different resources in the description of this video that you should find helpful. And you would also find that I've already solved a number of yearly papers from 2020 and 2021. They're also in the playlist link in the description. You can have a look at that as well. There's one particular video that I would recommend that you definitely watch before you come back for the next sessions with me here. And that's the first video in the yearly past papers playlist, because that gives you some tips and guidelines about how to attempt these 4 papers. I would want you to have that in mind when you're doing these papers. So I will not be going through all of these instructions every time. I've gone through these in that one video once, as in how you need to basically follow these instructions. Significant figures wali hai, 1 decimal place for angles and degrees hai, and the other instructions that you have. So I would be assuming that you already know about that stuff, and I'll go right into the actual questions. Okay, so this is the paper that we're starting then, May-June 2022, paper 4.2. Let's begin with this. Walaikum assalam, everyone. Okay, let's begin. Let's start with this. Question number 1 from this paper. So we have small smooth spheres A and B of equal radii and of masses 5 kg and 3 kg respectively. They lie on a smooth horizontal plane. Initially, B is at rest and A is moving towards B with speed 8.5 meters per second. The spheres collide, and after the collision, A continues to move in the same direction, but with a quarter of the speed of B. Find the speed of B after the collision. Now, let's represent this information in the form of a rough diagram to try to understand it, to be able to understand this better. So let's say we have a horizontal plane like this, and on this plane, what we have is we have 2 spheres. One is sphere A and the other is sphere B. So we have this line like this horizontal plane like this. On this plane, you have sphere A and sphere B. B is at rest initially. So initially, the speed of B is 0. So this is at 0 meters per second. Okay. Masses are 5 kg and 3 kg. Let me write them down here as well. These are the masses of these 2 spheres. A is moving towards B with speed 8.5 meters per second. So initially, A is moving towards B like this at a speed of 8.5 meters per second. Now, what happens after a collision? The spheres collide, and after the collision, A continues to move in the same direction, but with a quarter of the speed of B. So after collision, so this is before collision, what we have written here before. What happens after collision? After collision, whatever is the speed of A, B's speed is going to be 4 times that, right? Which speed are we looking for? We're looking for the speed of B after the collision. What we can do is we can say, let's call the speed of B after collision V. इसको हम V से represent कर लेते हैं. Let's say VB. What about the speed of A? A की speed जो है, it's quarter of the speed of B. So you can think of it like this. VA is 1/4. That means 1/4 of the speed of B. So अगर B की speed VB है right side के ऊपर, तो A की कितनी होगी? ये होगी 1/4 times VB to the right side. And now all we have to do is apply conservation of momentum. And that basically says momentum before collision, that is going to be equal to momentum after collision. All right. Let's just input values here. Momentum before collision, what's that?
मोमेंटम का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. So momentum of A before collision, what is that? Mass of A is 5 kilograms. So we say 5 multiplied by the velocity of A before collision, which is 8.5, plus the momentum of B. B is at rest, so uska momentum to pehle 0 hoga. You can say 3 into 0. On the right side, we have momentum after collision. Momentum of A after collision is going to be 5 into 1 over 4 times VB. And momentum of B is going to be 3 times VB. And now we just need to solve this equation and find the value of VB from this. Let's see what we get from this. 5 into 8.5, that is 42.5 on the left side. On the right side, we have 5 over 4 plus 3. And that is 17 over 4, or you can say 4.25 VB. And the speed of B from this is going to turn out to be 42.5 divided by 4.25, which is 10 meters per second. That is what we were looking for in the first part. That's the speed of B after the collision. All right. That was the first part. Let's look at the next part now. In the next part, it says, find the loss of kinetic energy of the system due to the collision. All you have to do is find the initial kinetic energy and find the final kinetic energy, find the difference. That is going to give you the loss of kinetic energy. Okay, let's try that. Initially, we know the speeds of both of the objects. We know the speeds after a collision now as well, because we have the speed of B after collision. What about speed of A? Speed of A is going to be 1/4 of this. That means 1 over 4 into 10, and that gives us 2.5 meters per second. That is the speed of A after collision. Let's find the kinetic energy before collision. The total kinetic energy before collision. You see, B was at rest before collision, so uski to koi speed nahi hogi, uski kinetic energy bhi nahi hogi. What about kinetic energy of A? Half into mv square, so that's half into 5 into speed of A, which is 8.5 squared. That is going to give you the kinetic energy before collision of A. B की वैसे ही 0 है, उसको आप consider करने की जरूरत नहीं है आपको. ये formula होता है. This is what I'm using here. Half mv square for kinetic energy. Let's evaluate this and see what this turns out to be. 2.5 into 8.5 squared. That is giving me 180.625. Similarly, you can find the kinetic energy after collision. After collision, both A and B are moving. A ka mass 5 hai, and A is moving at a speed of 2.5. So you have half into 5 into 2.5 squared plus half into 3. That's the mass of B into speed of B, which is 10 squared. ये evaluate कर लें. ये देखें आपके पास क्या आता है. 2.5 into 2.5 cube, 2.5 squared. This is giving me so plus, in fact, 1.5 into 100. This turns out to be 165.625. All right. So we have the initial kinetic energy before collision and the kinetic energy after collision. Since we're looking for the loss in kinetic energy, we can just find their difference. Loss in kinetic energy, that is going to be 180.625 minus 165.625. And that turns out to be 15 joules. That is the loss in kinetic energy that we have here. Okay. Now, if you were looking for change in kinetic energy, you would write minus 15, but it says loss in kinetic energy. Loss में minus sign एक तरह से already incorporated है, तो आपको minus sign वहाँ पे लगता नहीं है. This is just going to be 15 joules like this. All right, let's move on. That was question number 1. Pretty straightforward question on momentum. Let's have a look at the next one. We have coplanar forces of magnitude 60 Newton, 20 Newton, 16 Newton, and 14 Newton. They act at a point in the directions shown in the diagram. Find the magnitude and direction of the resultant force. We have 4 forces and the resultant figure out karna hai. How do we start with such questions? We start by, first of all, resolving the forces.
60 न्यूटन ऑलरेडी वर्टिकल एक्ट कर रहा है, 14 न्यूटन ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा है, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो फोर्सेस एंगल्स पे एक्ट कर रही हैं उनके कंपोनेंट्स फिगर आउट कर लें। 16 न्यूटन के कंपोनेंट्स व्हाट आर दे गोइंग टू बी? 16 के adjacent जो component है that is going to have cos with it, so that's 16 cos 50, angle के adjacent 50 degrees के adjacent component that is going to have cos with it, एक component ये होएगा, दूसरा component इसके नीचे की तरफ होएगा which is going to be 16 sine of 50. Okay, these are the two components of 60. अब आप 16 को अब आप नहीं consider करेंगे, इसके आपने components निकालनी है, you just have to focus on them now. Then what about the components of 20? It has two components, one acting to the right here, one acting downwards here. Angle के साथ वाले component के साथ cos लगेगा, so that's 20 cos 60, और angle के दूसरी side वाले component के साथ sin लगेगा, you get 20 sine of 60 degrees. Okay, so you have resolved the forces. Now, how do you find the resultant force for all of them? You find the horizontal resultant and the vertical resultant. तो आपने Rx figure out करना है और ry figure out करना है, ठीक है? Let's find the horizontal resultant. Normally हम क्या करते हैं, right side positive ले रहे होते हैं horizontal और vertically upwards positive ले रहे होते हैं, right? तो अगर horizontal resultant हम निकालेंगे, we can say the right side is positive, so that's 20 cos 60. Subtract from that the forces acting towards the left side. Horizontal forces हमारे पास ये आ रही हैं, जो मैंने yellow में highlight किया. Vertical forces कौन सी हैं? 60, 20 sin 60 and 16 sin 50. Remember, 20 आपने नहीं कंसिडर करना, उसके आपने कंपोनेंट्स निकाल लिया है, ठीक है? यहाँ पे लिख लेते हैं 20 cos 60 minus 14 minus 16 cos 50. Now you do not need an exact answer here. उसने कोई क्वेश्चन में कोई रिस्ट्रिक्शन तो इस तरह की नहीं लगाई, तो आप इसको डेसिमल्स में लिख सकते हैं डायरेक्टली, कैलकुलेटर से पूरा का पूरा इवैल्यूएट कर लें और देखें आपके पास क्या आता है. Let's do this. 20 cos 60 minus 14 minus 16 cos 50. This is giving me minus 14.285 Newton. I'm using more decimal places here ताकि final answer हमारा accurate आए, तो आपने ज़्यादा decimal places रखने हैं यहाँ पे. You get minus 14.285 from this. Okay, अभी देखिए नेगेटिव नंबर आ रहे हैं ना, जब नेगेटिव नंबर आ रहा है इसका मतलब है कि ये लेफ्ट साइड पे एक्ट कर रहा है, बिकॉज राइट साइड पॉजिटिव थी तो लेफ्ट साइड नेगेटिव है. नेगेटिव रिजल्ट आने का मतलब ये है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट है, वो लेफ्ट साइड पे लग रहा है. ओके, सिमिलरली यू फाइंड द वर्टिकल रिजल्टेंट ry. अपवर्ड फोर्स कौन सी है? 60. 60 में से आप माइनस कर दें. डाउनवर्ड फोर्सेस वी हैव 16 sin 50 and also subtract 20 sin 60 and see what this turns out to be. 60 minus 16 sin of 50 minus 20 sin 60. This turns out to be 30.423 for me. 30.423. This is a positive number that I'm getting. ये आपका इसका मतलब है upwards लग रहा है. आपने horizontal और vertical resultants निकाल लिए. All you have to do now is think of this right angle triangle. Horizontal resultant देखें left side पे लग रहा है. So you are going to have one line acting to the left side here. This is your horizontal resultant. इसकी value क्या आ रही है? 14.285. It's acting to the left side. और फिर upwards कितना लग रहा है? Upwards we have 30.423. We are looking for the magnitude and direction of the resultant. Magnitude कैसे आएगा? इसका जो resultant बनेगा, it's going to be like this. This is the overall resultant. We can find the magnitude using Pythagoras. That is going to give us R equals square root of 30.423 squared plus 14.285 squared. ये evaluate कर लेंगे, इससे हमारे पास resultant का magnitude आ जाएगा. Let's do this. 30.423 squared plus 14.285 squared. And then square root of that, this is giving me 33.6 Newton.
And that is the magnitude of the resultant that we get from this, 33.6 Newton. Okay. Similarly, find the angle. Ab angle kaise figure out karenge? You can find this angle first of all. Let's call this theta. Ye kaise aa sakta hai? You can use tan. This is perpendicular. This is base. So tan of theta is going to be equal to 30.423 divided by 14.285. Tan inverse कर लें इसका और देखें आपके पास इससे क्या आता है 30.423 divided by 14.285. If I do tan inverse of that, this gives me 64.8 degrees. Okay, but this is not enough. You have to describe this direction. Okay, तो आप क्या लिखेंगे अब resultant? आप कहेंगे resultant is 33.6 Newton at an angle of 64.8 degrees. अब वो 64.8 degrees किस direction के अंदर है? Think of the coordinate axis. आप x axis का सोचें. ये आपका x axis है और y axis किस direction में लग रही है force? इस direction में. This is negative x axis left side पे. इसके ऊपर angle जो बन रहा है ये 64.8 degrees है. So how are you going to describe this? You would say 33.6 Newton at 64.8 degrees above the negative x axis. That is how you could describe this. Direction आपको इस तरह से properly describe करनी पड़ेगी. You can't just write down the angle here. That is not going to be acceptable. Okay. So this is the resultant that we get from this 33.6 Newton at 64.8 degrees above the negative x-axis. This is one way of describing this. आप ये भी कर सकते थे कि 64.8 degrees clockwise from the negative x-axis. या आप ये भी कर सकते थे कि ये angle ये जितना भी बनता है 115.2 degrees anti-clockwise from the positive x-axis. There are multiple ways of describing this. This is one way to do it that you've done here. Okay. All right, let's move on. That was question number 2. We just had to find the resultant. It's a standard question, so these were like easy 6 marks. If you've done enough practice, it's pretty straightforward. Okay. Let's move on. Question number 3 from this paper. It says 2 particles A and B of masses 2.4 kilograms and 1.2 kilograms respectively. They are connected by a light and extensible string which passes over a fixed smooth pulley. A is held at a distance of 2.1 meters above a horizontal plane and B is 1.5 meters above the plane. Let's quickly skim the question first. So the particles hang vertically and are released from rest, and the subsequent motion A reaches the plane, does not rebound, and B does not reach the pulley. Show that the tension in the string before A reaches the plane is 16 Newton, and find the magnitude of the acceleration of the particles before A reaches the plane. Okay, so first of all, we have to understand the situation, and it often helps if you do not have a diagram given. It often helps that you draw a rough sketch of the situation. Okay, it will help you understand this better. Let's represent the situation here. A is held at a distance of 2.1 meters above a horizontal plane, and B is 1.5 meters above the plane. The particles hang vertically and are released from rest. Okay, so it's a situation like this, that you have a horizontal plane. You have a horizontal plane, and there's a pulley here like this. उस पुली के ऊपर से 2 strings पास करी हैं. एक स्ट्रिंग पास करी, इनफैक्ट एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे. A जो है वो 2.1 meters above है और B जो है 1.5 meters above है. So एक लाइन थोड़ी सी यहाँ पे छोटी कर लेता. Let's say this is for A and this is for B. Okay, so this is what it looks like. अब एक साइड पे आपके पास A है
और it's a particles जिसको हम डॉट से कनेक्ट कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं. This is A and this is B. A is at a height of 2.1 meters. इसकी हाइट 2.1 meters है. And B is at a height of 1.5 meters. Okay. The particles hang vertically and are released from rest. In the subsequent motion, A reaches the plane and does not rebound. So A नीचे आ रहा है and it does not rebound. The reason for that is A का weight देखें क्या है. A का mass 2.4 kilograms है, तो उसका weight कितना आएगा? 24 Newton. That is acting downwards here. और B का weight कितना है? B का weight is 1.2 into 10, which is 12 Newton. B का weight 12 Newton है. A का weight ज्यादा है. अगर आप इनको रिलीज करेंगे तो of course A नीचे की तरफ आ रहा होगा और B ऊपर की तरफ जा रहा होगा, right? तो आपको करना क्या है? A नीचे आता है, वो रीबाउंड नहीं करता, वो ग्राउंड पर टच करता है, और B जो है वो पुली को रीच नहीं करता, उसने ये बताया. Now show that the tension in the string before A reaches the plane is 16 Newton and find the magnitude of the acceleration of the particles before A reaches. आपने tension और acceleration निकालना है, ठीक है? Now this is a simple application of Newton's law, second law of motion. आप देखिए forces क्या ऐड कर रही हैं, string से connected है पुली के थ्रू. A के ऊपर कौन कौन सी forces लग रही हैं? Downward force लग रही है 24 Newton. Upward force कौन सी लग रही है? Tension. Tension always acts away from the object, right? So away from the point that you're looking at. A के ऊपर अगर आप देखेंगे A से away लगेगी, या टेंशन ऊपर को लग रही है. B के ऊपर देखें कौन सी फोर्सेस लग रही है. एक 12 न्यूटन नीचे को लग रहा है और एक ऊपर को फोर्स लग रही है, विच इज टेंशन. टेंशन इज गोइंग टू बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स बिकॉज़ इट्स अ सिंगल स्ट्रिंग. पुली के ऊपर से जब भी आपकी स्ट्रिंग पास कर रही होती है, दोनों साइड्स के ऊपर इक्वल टेंशंस होती हैं, ठीक है? ये आपकी सिचुएशन है. अब we know that resultant force is equal to mass into acceleration, right? अगर आप ये A पे अप्लाई कर दें और B पे अप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आएगा? A किस साइड पे जा रहा है? A नीचे की तरफ जा रहा है. A के लिए फॉरवर्ड फोर्स क्या है? 24. So we say 24 minus the backward force for A, which is T. This is going to be equal to mass of A, which is 2.4 into acceleration. ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई. Then think of B. B किस साइड पे जा रहा है? B ऊपर की तरफ जा रहा है. जब A नीचे जा रहा है तो B ऊपर जा रहा है. B के लिए फॉरवर्ड फोर्स कौन सी है? Upward force, which is T. So that is going to be T minus the downward force, which is 12. T minus 12 equals mass of B, which is 1.2 times acceleration. You get these two equations, you just solve these two simultaneously, and you would get your values for T and A. इनको simultaneously solve कर लेते हैं. देखिए हमारे पास क्या आता है. First equation से we get T equal to 24 minus 2.4 times A. From the second equation we get T equals 12 plus 1.2 times A. We can equate both of them from here. 24 minus 2.4A, that equals 12 plus 1.2A. You could take everything to, you could take the terms in containing A to one side. If we take them to the right side, that gives us 3.68. 12 को left पे ले, that gives us 12. 24 minus 12, that is going to be 12, right? Now 12 over 3.6, let's see what this turns out to be. This is giving me 3.33333. In fraction, it's 10 over 3 meters per second square. This is your acceleration. अब आपको टेंशन फिगर आउट करनी है. टेंशन आपको प्रूव करनी है कि वो 16 न्यूटन है. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? किसी भी इक्वेशन में इनपुट कर दें कि आपके पास टेंशन की वैल्यू क्या आती है. Tension equals 24 minus 2.4 into 10 over 3. Put this whole thing in your calculator and see what that gives you. 24 minus 2.4 into 10 divided by 3. And we get 16 from this. ये आपकी टेंशन की वैल्यू आ गई. Okay? That was part A of this. आपको टेंशन फिगर आउट करनी थी और एक्सेलरेशन फिगर आउट करनी थी. बच्चे पेपर 3 और S1 जो है वो मैं ऑलरेडी साथ साथ कर रहा हूँ. I started from paper 3 yesterday. Paper 1 इस सेशन का मैंने ऑलरेडी एक किया हुआ है. So what I'll do is I'll be doing a different paper every day. So I started from paper 3 yesterday. Today we're doing M1. Tomorrow we will be doing S1 inshallah of this session, which also includes that question. Remember that question include on crocodile, if those of you have attempted that.
That's one of the most difficult questions that you would find in permutations and combinations in past papers. We'll be doing that tomorrow, inshallah. And then we will go alternately like this: paper 1, paper 3, M1, S1, like this. Okay. So Afi, I will be doing O-level past paper session from next week, inshallah. Okay. Next week se start karunga. Time is final nahi abhi, but next week se. All right, let's move on. Part B of this. Question number 3 part A, ये हमने देख लिया. Part B देखें. Part B में वो कहते हैं find the greatest height of B above the plane. All right, now how do we think about this? Greatest height of B above the plane. Now let me just copy this diagram for the next part. Okay, so what we need to do is we need to find the greatest height of B above the plane. Now let's think about this. अब forces हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने उनसे already acceleration figure out कर लिया. अब देखें A नीचे मूव कर रहा है, राइट? A नीचे मूव कर रहा है तो A नीचे पहुंचेगा ग्राउंड पे after 2.1 meters. When A reaches the ground, B जो है उतनी देर में 2.1 meters ऊपर मूव कर चुका होगा. तो अगर इस पुली को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूं, बिकॉज उसने कहा है कि पुली को रीच नहीं करता भी, इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं. और पुली को अगर हम यहाँ पे बना लें, okay, let's say the pulley is here. We have the strings coming from that like this. अच्छा देखिए, जब A नीचे ग्राउंड पे हिट करेगा तो B कहाँ पे पहुंच चुका होगा? B 2.1 meters ऊपर पहुंच चुका होगा. मे बी समवेयर हियर. ये 2.1 meters वो ऊपर चला गया ऑलरेडी इस पॉइंट पे. अब जब A ग्राउंड को हिट करता है तो A रिबाउंड नहीं करता, उसने कहा है. A वहीं पे रुक जाता है. अब जब B इस पॉइंट पे पहुंचेगा, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी, वो एकदम तो नहीं रुकेगा. जब यहाँ से ऊपर जा रहा है कि एक्सेलरेशन के ऊपर, उसने रेस्ट से स्टार्ट किया था, रेस्ट से स्टार्ट करके ऊपर पहुंचने तक उसकी कुछ स्पीड डेवलप हो गई है. वो कुछ भी स्पीड है, लेट्स से 3 meters per second, अभी हम फिगर आउट करते हैं वो क्या है. तो वो एकदम तो जीरो नहीं होगी, वो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा और फिर अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, फिर नीचे आएगा. सो हमें फिगर आउट करना है जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है उस पॉइंट तक उसकी हाइट कितनी है. ये मैक्सिमम पॉइंट हमने फिगर आउट करना है बी के लिए. Now we already know 1.5 meters वो पहले ही ऊपर है. 2.1 meters उसने और ट्रैवल कर लिया होगा. जब A नीचे ग्राउंड को हिट करेगा तो हमें देखना है कि और कितना ऊपर ट्रैवल करता है अभी वो, राइट? नाउ हाउ डू यू फिगर दैट आउट? देखिए, जब पॉइंट, इसको हम कुछ मार्क कर लेते हैं. लेट्स कॉल दिस पॉइंट x. जब उसने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग पॉइंट को x कह लेते हैं. इस पॉइंट को हम कह लेते हैं y और ऊपर वाले पॉइंट को कह लेते हैं z. x y वाला जो पार्ट है ना, इसमें जो स्ट्रिंग है वो टॉट है. तो इसमें आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी जो हमने फर्स्ट पार्ट में फिगर आउट किया? 10/3. जब तक स्ट्रिंग टॉट है तो एक्सेलरेशन वो होगी जो हमने फर्स्ट पार्ट में फिगर आउट की है. A और B की सेम एक्सेलरेशन है, राइट? तो उसमें हमें पता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू थी 10/3. अब B ऊपर को जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है इसकी कितनी थी, 0 थी. और हमें ये भी पता है इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 2.1 ट्रैवल किया है. So we have this information for the XY part of the journey. Now, for the YZ part of the journey, आपकी जो स्ट्रिंग है वो स्लैक है. So let me represent that here. YZ part में the string is not taut anymore because A ने ग्राउंड को हिट कर लिया होगा. जब A ग्राउंड को हिट कर जाएगा और B इस पॉइंट से ऊपर जाएगा तो स्ट्रिंग स्ट्रेट नहीं रहेगी और वो इसमें स्लैक आ जाएगा, राइट?
इस पार्ट में व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, जब स्ट्रिंग में स्लैक आ जाता है और इस तरह से वर्टिकल आपकी मूवमेंट होती है, तो आपका जो पार्टिकल होगा वो फ्री फॉल में होगा एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो वाई जी पार्ट में हमें क्या पता है, y से लेकर z तक वी डू नॉट नो द इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता, बट वी डू नो द फाइनल वेलोसिटी। z पे जाके अगर हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है मैक्सिमम हाइट के ऊपर अगर वो पहुंचता है तो वहां पे उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता है 0 है। एक चीज हमें ये पता है वाई जी पॉइंट में। ठीक है, व्हाट एल्स डू वी नो, एक्सेलरेशन, इट्स फ्री फॉल राइट। सो y से z पे जब जब वो जा रहा है इस तरह से, y से z पे जा रहा है, तो इस पार्ट में एक्सेलरेशन कितनी होगी वो ग्रेविटी पे बेस करेगी। अब क्योंकि पार्टिकल ऊपर मूव कर रहा है, ग्रेविटी नीचे को लगती है, अगर हम ऊपर वाली साइड पॉजिटिव अज्यूम करते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज ग्रेविटी नीचे को लगती है, हम ऊपर वाली साइड पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ए की वैल्यू जो है वो -10 होगी। What else do we know? Do we know the time taken? Do we know the displacement? नहीं, हमें displacement तो actually figure out करनी है। अब देखिए हमारे पास दो चीजें हैं सिर्फ, इससे हम डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते unless we know one of the two other things that are left। या तो हमें टाइम चाहिए इस पार्ट का, या हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए y के ऊपर। हम क्या कर सकते हैं, हम y के ऊपर वेलोसिटी निकाल सकते हैं फ्रॉम द एक्स वाई पार्ट ऑफ द जर्नी। इस पार्ट से आप पॉइंट y के ऊपर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जब पॉइंट y के ऊपर वेलोसिटी आ जाएगी तो वो वाई जी पार्ट की इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो जो फर्स्ट पार्ट हमने ऊपर लिखा हुआ है उसमें से हम x टू y जर्नी में फाइनल वेलोसिटी फिगर आउट कर लेते हैं, v फिगर आउट कर लेते हैं। नाउ व्हिच इक्वेशन कनेक्ट्स दीस फोर थिंग्स, a u s v, this is constant acceleration, right? So इनको connect करती है 2as equals v square minus u square, or you can write it like this, v square equals u square plus 2as. This is how it's written in the formula sheet. V square is equal to u square, which is 0 squared plus 2 into a, which is 10/3 into s, which is 2.1. इससे क्या होगा, आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, वो आप कैलकुलेट कर लें। इससे 2 into 10/3 divided by 2.1, and this turns out to be 14. And then we have to take square root of this, square root of 14. So v turns out to be square root of 14 from this. This is the velocity at the point y. Velocity of v at the point y. ठीक है, अब yz पार्ट में ये जो y पे वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो अब आपके पास एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आ गया सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी में, कि जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे है दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 14। इस पॉइंट पे वेलोसिटी आपको मिल गई है, इट्स 14 का स्क्वायर रूट मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, अब इस पार्ट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये एडिशनल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं वाई जी पार्ट की। ठीक है, एस फाइंड करना है, ए वी और यू है, वी कैन यूज द सेम इक्वेशन अगेन, 2as equals v square minus u square, या ये फॉर्म यूज कर लें जो ऊपर लिखी है, दैट वुड गिव अस 0 squared equals u squared, which is going to be square root of 14 का होल स्क्वायर्ड plus 2 into a, which is -10 into s। यहाँ से आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी, so you're basically getting 20s equals 14, and s is going to be equal to 14/20, which is 0.7। ये आपका डिस्टेंस आ गया फ्रॉम y टू z, राइट। आपको फाइंड क्या करना है, ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ b अबव द प्लेन। तो ग्रेटेस्ट हाइट कितनी हो जाएगी, आप ये सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर लें, यू हैव 1.5 मीटर्स जो ऑलरेडी b की हाइट थी, 2.1 मीटर्स उसने ट्रैवल किया जब तक स्ट्रिंग टॉट थी, और फिर उसके बाद उसने ऊपर और ट्रैवल किया कितना, 0.7। तो मैक्सिमम हाइट या ग्रेटेस्ट हाइट आपकी कितनी होगी, फिर आप इन सबको हाइट ऐड कर लें, अबव द प्लेन कितनी हाइट हो जाएगी, 1.5 plus 2.1 plus 0.7। You can see what this turns out to be, 2.8 plus 1.5, that is going to be 4.3 meters. That was the maximum height that you were looking for in this case. Okay, तो जब भी आपके पास इस तरह का केस आता है जहाँ पे आपके पास दो पार्टिकल्स अटैच्ड हैं और एक कहीं पे हिट करता है तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है, अब उसके दो पार्ट्स में आपको ब्रेक करना पड़ता है।
ठीक है? I hope this makes sense. This was a bit harsh in the sense it only has 3 marks. It deserves more than 3 marks, but that's how some of the recent papers of M1 have been, unfortunately. So that was question number 3, part B. Let's move on. Look at the next part. Look at the next question now. Question number 4 from this paper. We have a particle A that moves along a straight horizontal track with constant speed 8 meters per second. Okay, so there's this particle A. It's moving along a horizontal track with constant speed 8 meters per second. Speed constant hai yahan pe. It passes a fixed point O. 4 seconds later, another particle B passes O, moving along a parallel track in the same direction as A. Particle B has speed 20 meters per second when it passes O and has a constant deceleration of 2 meters per second square. Okay. B has a speed of 20 meters per second when it passes O, and a constant deceleration after that of 2 meters per second square. B comes to rest when it returns to O. Find expressions in terms of T for the displacement from O for each particle T seconds after B passes O. All right, so how do we think about this? Displacement के functions आपको figure out करने हैं. Let's think about A first of all. देखिए A तो constant speed पे move कर रहा है. जब constant speed पे move कर रहा है, तो उसके लिए तो हम simply क्या कर सकते हैं? आपका जो formula आपने छोटे होते पढ़ा था, distance equals speed into time. You can just use that. Distance equals speed into time. You can just use that here because आपकी speed constant है. Constant speed was one case जहाँ पे आप वो simple वाला formula directly use कर सकते हैं. ठीक है. Let me just confirm this. B की speed ये है और A की ये है. B comes to rest when it returns to O. Find expression in terms of T for the displacement of O of each particle T seconds after B passes O. अच्छा, अब B जब पास करेगा O को, तो उस टाइम पे हमारे पास टाइम कितना गुजर चुका होगा? अच्छा, या सो यहाँ पे एक ये चीज हमने यहाँ पे मिस कर दी. 4 seconds later. तो जब A ने स्टार्ट किया, जब B ने स्टार्ट किया, उस टाइम तक ऑलरेडी 4 seconds गुजर चुके हैं. 4 seconds are already gone at that point. तो ऑलरेडी जो है टाइम इक्वल 0 के ऊपर A ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा. वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? 8 meters per second की स्पीड है, राइट? 4 seconds गुजर चुके हैं. 8 times 4, what does that give us? That gives us 32. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए जो होगी वो 32 तो ऑलरेडी होगी आपके पास. 32 डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी होगी शुरू में. ठीक है. अब उसमें आपको ऐड करना है कि वो और कितना ट्रैवल करेगा every second after B passes the point O. You can just use that. This formula for that, distance equals speed into time. आपकी speed कितनी है? 8 meters per second. Time कितना लग रहा है? T. So you can say it's 32 plus 8 times T. For instance, time equals 0 यहाँ पे input करेंगे, आपके पास 32 आ जाएगा time equals 0 के ऊपर. 32 distance उसने already travel किया हुआ है. Remember time कब से start हो रहा है? जब B ने O को क्रॉस किया, तब से टाइम स्टार्ट हो रहा है. तो टाइम 0 पे 32 इसका ऑलरेडी डिस्टेंस ट्रैवल्ड है. टाइम इक्वल्स 1 के ऊपर ये 32 plus 8 times 1 यानी 40 हो जाएगा, and so on. All right, so that's the displacement, that formula that we have for particle A. Now, what about particle B? Particle B का उसने कहा है कि उसने स्पीड 20 से स्टार्ट किया. स्पीड 20 से स्टार्ट करके उसकी कांस्टेंट डिसेलेरेशन है 2 meters per second square की. So for B, you know what the initial velocity is, 20.
you know what the deceleration is, यानी acceleration की value क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी. This is constant deceleration. टाइम कितना गुजरा है, t, तो टाइम की वैल्यू t है. आपको डिस्प्लेसमेंट फिगर आउट करनी है. s, u, a और t को कौन सी इक्वेशन कनेक्ट करती है? It's s equals ut plus half at square, right? This is an equation that you have for this. S equals ut plus half at square. We can just use that here. SB कितना हो जाएगा, u which is 20 into t plus half into a which is -2 into t squared. And that gives us 20t minus t square. That should be the displacement of the particle B t seconds, after t seconds it passes over. All right, so these are the two expressions that we have for particle A and particle B. Okay, let's move on. Part B. In part B, it says find the values of t when the particles are the same distance from O. Well, all we have to do is we have the two displacement functions. O से उनका distance same होना चाहिए, यानी कि O से उनकी जो displacement है वो equal होनी चाहिए. All you have to do for that is just equate these two displacement functions. ये आपके पास A के displacement है, ये B के displacement है, दोनों को equate कर दें और देखें आपके पास क्या आता है उससे. SA should be equal to SP, so that gives us 32 plus 8 times t, that equals 20t minus t squared. Okay, so this is an equation that we have. Just solve this equation and see what you get from this. It becomes t square minus 12t plus 32 equals 0. Can we factorize this? 32 is 8 times 4. So we can say this is t squared minus 8t minus 4t plus 32 equals 0. You have to show this working. Do not write down the answers directly. You will not get marks if you do that. You have to make sure that you write down, you show the working for this, either factorize or input values in the quadratic formula. Now, if we do this, this gives us two factors, t minus 8 and t minus 4. That means t is either equal to 8 or t is equal to 4. These are the two values of t that we get from this. Now, this was much more straightforward as compared to the first part. But if you were not able to do the first part, then the second part would end up being incorrect as well. You might just get the method marks, but not full marks for this. So this is part B of this question. Okay, let's move on. Now it says on the given axes, so we have these axes given, sketch the displacement time graphs for both particles for values of t from 0 to 20. अब देखिए आपके पास दोनों functions हैं, 32 plus 8t and 20t minus t square. ये तो एक तरह से paper 1 का question हो गया, because you know what the functions are. एक आपकी straight line है और दूसरा आपका एक quadratic function है. इनके बस आपको graphs draw करने हैं यहाँ पे. Okay, so just have to plot those functions. Straight line तो काफी straightforward है. t equals 0 के ऊपर उसकी क्या value होगी, 32. Right, time equals 0 input कर दें, 32 आ जाएगा आपके पास. So that might be somewhere here. Let's say this is 32. ये आप यहाँ पे एक point mark कर दें. Then at time equals 20, आप यहाँ पे t की value 20 input कर दें. देखें आपके पास क्या आता है उससे. 32 plus 8 into 20. This is giving me 192. तो 20 के ऊपर जो इसकी speed होगी, that is going to be just below 200. This is 192. ठीक है, तो roughly इसको mark कर लेते हैं यहाँ पे. Let's say this is somewhere around here. ठीक है, now you can just draw a straight line through these 2 points, and that is going to look like this. ये आपका एक graph हो गया. This is displacement of A. All right, this is one thing that we had to figure out. We had the displacement of A का graph आ गया. What about B now? अब आपको B का graph draw करना है. 20t minus t squared. It's a quadratic function. What is the shape of this quadratic function? It's an n-shaped graph, right? T squared का coefficient negative है, तो ये n-shaped graph होगा. इसके x-intercepts आपको clearly यहाँ से पता चल रहे हैं. अगर आप 0 से equate करें इसको, तो आपके पास क्या आता है?
displacement 0 कब होती है? 20t minus t squared, you can take t common and that gives you 20 minus t. So t equals 0 और t equals 20 के ऊपर आपकी displacement की value क्या होती है? 0 होती है. So this graph is going to start from 0 and also end at 0. Time equals 20 पे भी displacement की value 0 है, time equals 0 पे भी displacement की value 0 है. अब दरम्यान में एक कर्व बनेगी, आपने इसका देख लेना है मैक्सिमम हाइट इसकी कहाँ तक जाती है, वो आप देख लेंगे. मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाती है? लेट्स फिगर दैट आउट. मैक्सिमम हाइट हम इसकी फिगर आउट कर सकते हैं. टर्निंग पॉइंट इसका कैसे आ सकता है? माइनस बी ओवर टू ए यूज कर लें, माइनस बी ओवर टू ए, उससे आपके पास इसका हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट निकल जाएगा. वो तो 10 पे, वो तो काफी क्लियर है. वैसे आपको अगर पता है ये 0 एक्स इंटरसेप्ट है, ये 20 एक्स इंटरसेप्ट है, तो जो टर्निंग पॉइंट होगा वो इनके बिल्कुल सेंटर में होगा. आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट एक्स इक्वल्स 10 के ऊपर टर्निंग पॉइंट, टी इक्वल्स 10 के ऊपर टर्निंग पॉइंट होगा, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट होगा. तो आप टी इक्वल्स 10 इसके अंदर इनपुट करके देखें आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या मिलती है. 200 माइनस 100 दैट गिव्स मी 100. तो जो क्वाड्रेटिक ग्राफ है उसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो कहाँ तक जाएगी? वो 100 तक जाएगी, इस तरह से. ठीक है, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस. आप बस रैंडमली ऐसे नहीं ड्रॉ कर देना, आपने देखना है मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जा रही है. ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम हाइट है. अब देखें, यू हैव टू बी अगेन अ बिट केयरफुल. आप इसको इस तरह नहीं बस ड्रॉ कर देंगे, that would be wrong because you've just proved in the previous part कि इनकी डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल होती हैं 2 पॉइंट्स के ऊपर. टाइम इक्वल्स 8 के ऊपर और टाइम इक्वल्स 4 के ऊपर दोनों की डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल हैं. तो यानी कि इन 2 पॉइंट्स के ऊपर ये ग्राफ इंटरसेक्ट करने चाहिए. तो इस तरह से ग्राफ बनाएंगे तो दैट इज गोइंग टू टर्न आउट टू बी इनकरेक्ट, राइट. तो आपके 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे यहाँ पे, एक टाइम इक्वल्स 4 के ऊपर और टाइम इक्वल्स 8 के ऊपर. लेट्स से 4 इज समवेयर हियर एंड 8 इज समवेयर हियर. तो यहाँ पे आप एक तरह से कह सकते हैं ग्राफ को आपका इसको कट कर रहा होगा, इसको क्रॉस करके जा रहा होगा. अब इसको आपने ग्राफ ही बनाना है कि बहुत ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, बट लेट मी एक्चुअली डू इट लाइक दिस. इस तरह से आपकी ये कर्व इस साइड पे बन रही होगी तकरीबन. So we can just change these points a little. You can say this is slightly to the left here. This is also slightly to the left. We have 4 and 8. इन पे intersect करें. इसी तरह से आप right side पे symmetrical curve बना देंगे. And this is how the graph of this quadratic function looks like. There are 2 points of intersection that we have here. अगर आपने ये पिछले पार्ट में शो नहीं किया होता, आपने ये टाइम की वैल्यूज नहीं निकाली होती, इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाले होते, फिर आपको वो शो करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसके मार्क्स नहीं होते. लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपने ऑलरेडी फिगर आउट कर ली हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दैट इन योर ग्राफ. ओके, और टर्निंग पॉइंट ऑफ कोर्स आपको देखना ही है क्वाड्रेटिक फंक्शन का, और उसके साथ साथ एक्स इंटरसेप्ट्स अगर वो इजीली आ सकते हैं, यहाँ पे इजीली आ सकते थे एक्स इंटरसेप्ट्स यानी कि हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट्स, वो भी आपको शो करने हैं. सो दिस इज हाउ दिस ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक. Okay, so this is the graph of the particle B, the displacement graph of particle B. Let's move on. This was question number 4 from the worksheet. Let's move on to question number 5 now. We have a block of mass 12 kg. So this is the last question that we're doing before a short break. We'll have a break for namaz after this. We have how many questions left after this? 6 and 7. So we have 6 here. And then 7. All right, so we'll have a break after question number 5, a 10-minute break. We'll come back after that. So let's do question number 5 quickly. We have a block of mass 12 kilograms. This is placed on a plane which is inclined at an angle of 24 degrees to the horizontal. Okay, a block of mass 12 kilograms is placed on a plane which is inclined at 24 degrees to the horizontal. A light string making an angle of 36 degrees above line of greatest slope is attached to the block. You can see all of that in the diagram. Mass is 12 kg. That is not shown there, so you have to keep that in mind. The tension in the string is 65 newtons.
and the coefficient of friction between the block and the plane is mu. The block is in limiting equilibrium. Limiting equilibrium जैसे आप पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहली चीज क्या आपके ज़हन में आनी चाहिए, F equals mu r. लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में या जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, इन दोनों केसेस के अंदर फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू आर के इक्वल होती है, राइट? एंड इट्स ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग अप द प्लेन. ऊपर स्लाइड करने लगा, इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन कहाँ पे लग रही होगी? फ्रिक्शन लग रही होगी नीचे की तरफ. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. ऑफ कोर्स अलोंग द प्लेन, लेकिन नीचे वाली डायरेक्शन के अंदर. We have to find the value of mu. All we have to do is just represent the forces. First of all, इस block पे कौन सी forces लग रही हैं? There's weight of the object, weight of the block, which is 120 Newton. 12 kg का mass है, तो weight कितना हो जाएगा? 120 Newton. That's going to be acting vertically downwards like this. What else? We have the reaction force. Reaction surface के perpendicular लगता है, so it's going to be like this. ये एक और force है. Friction आपने already represent कर लिया. Tension यहाँ पे कोई है नहीं. In fact, tension already उसने बताई हुई है, 65 Newton जो है ये tension है. तो ये आपकी एक force है. These are all the forces that are acting on this object. Okay. Now you have to resolve these forces. Remember, जब inclined plane होता है आपके पास, तो आपने resolve कैसे करना होता है forces को? Surface के parallel और surface के perpendicular. Okay, surface के parallel और surface के perpendicular. 65 Newton को resolve कर लें. इसके एंगल कितना बन रहा है? 36 degrees. 36 के adjacent जो component होएगा, that's going to be 65 cos 36. और 36 के जो दूसरी साइड पे component है, that is going to have sin with it. ये component क्या हो जाएगा? 65 sin 36. Okay. Similarly, weight is also not parallel or perpendicular to the surface. तो इसको भी आपको resolve करना पड़ेगा. इसके components कैसे आएंगे? एक component इस side पर होएगा और दूसरा इस side के ऊपर. If this angle is 24, remember this angle here is also going to be 24, right? तो इसके components क्या बन जाएंगे? 120 cos 24, that's in this direction, and in the other direction along the surface, this component is going to be 120 sine of 24. ये आपने forces पर resolve कर लिया, ठीक है? अब कौन सी forces relevant है उनको हम highlight कर लेते हैं. Remember, ये आपकी directions है एक तरह से. जब plane होता है तो plane के accordingly आप इस तरह सोच सकते हैं. This is upwards, this is left, this is right, and this is the down direction. Left, right पे कौन सी forces लग रही हैं? You have friction acting towards the left, 120 sine 24 acting towards left, and 65 cos 36 acting towards right. Perpendicular to surface, कौन सी forces लग रही हैं? Up down, you have 65 sine 36, you have R, and downwards you have 120 cos 24. All we have to do is equate the opposite forces. Upwards forces को downward forces से equate कर दें और left वाली forces को right वाली forces से equate कर दें. ठीक है? This is all that we have to do. Left equals right. Left वाली forces को right वाली forces के equal कर दिया और upwards वाली forces को equate कर दें downward forces के. अब लेफ्ट पे कौन सी फोर्स है हमारे पास? 120 साइन ऑफ 24 डिग्रीज प्लस फ्रिक्शन. राइट साइड पे वी हैव 65 cos 36. अपवर्ड फोर्स है 65 sin 36 और downwards, in fact we also have R upwards, 65 sin 36 plus R. Downwards we have 120 cos of 24 degrees. ठीक है? Now we just solve these two equations simultaneously. Remember, friction क्या होगी यहाँ पे? Mu r के equal, because this is limiting equilibrium. आप इसकी जगह पर mu r लिख सकते हो. Let's simplify everything else first. और इसको ऐसे रहने देते हैं बेशक. 120
sin 24 ताकि end पे answer exact आ रहा 120 sin 24 plus mu r equals 65 cos 36. ये आपकी एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन देखिए, आप r की वैल्यू ऑलरेडी निकाल सकते हैं because there's only one unknown and that is r. Let's figure out r from this. या कैलकुलेटर पे डायरेक्टली कर लें 120 cos 24 subtract from that 65 sin 36 and this turns out to be 71.419 for me. आपने ज्यादा डेसिमल्स यूज करने अपनी वर्किंग में ताकि आपके फाइनल आंसर जो है वो एक्यूरेट आ रहे हो, ठीक है। This is the value of r. You input this value of r in the other equation now and see what that gives you. 120 into sine of 24 plus mu into 71.419. On the other side, you have 65 cos 36. So mu is going to be equal to 65 cos 36 minus 120 into sine of 24 whole divided by 71.419. If you want, you can convert this to decimals at an earlier point as well. बस अगर आप decimals में करें, make sure that you are using a higher level of accuracy, ज़्यादा decimal places या ज़्यादा significant figures आपने use करने हैं ताकि final answer सही आ रहे हो, ठीक है। Let's evaluate this 65 cos 36 minus 120 sine of 24 divided by 71.419. This is giving me something that's not equal to what you guys have posted in the chat box. It's giving me 0.05289. So I'm getting 0.05289. इसमें कोई instruction तो नहीं दिया उसने. If you wanted, you could round it off to 0.0529. That would be 3 significant figures. अगर आप इस तरह भी छोड़ देंगे, that's also acceptable because question के अंदर कोई instruction नहीं है, तो आपको minimum 3 significant figures रखते हैं. उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता. ठीक है, that was question number 5 from this paper. That was 6 marks. Again, that was a pretty standard question as well. Now we have 2 questions left, question number 6 and 7. Let's have a short break and we will resume at around 5:45 inshallah. All right, then let's resume. Before we resume, make sure that you, if you haven't already, make sure that you like the stream and also subscribe to the channel and share with others if you think this content might be helpful for others as well. You can have a look at the description for recordings of my crash courses in paper 1, M1, S1, and paper 3, and also some quick revision videos, which a lot of people find helpful, and yearly past papers that I did last year as well. You would find 2020 and 2021 papers from last year there as well. Okay. All right, let's resume. Question number 6 from this paper. A car of mass 900 kg is moving up a hill inclined at sine inverse of 0.12 to the horizontal. So this is actually the angle that's given, sine inverse of 0.12. The initial speed of the car is 11 meters per second. After 12 seconds, the car has traveled 150 meters up the hill and has speed 16 meters per second. The engine of the car is working at a constant rate of 24 kilowatt. Find the work done against the resistive forces during the first 12 seconds. That is what we need to figure out. Okay, now let's try to understand the situation. So we have theta, which is sine inverse of 0.12. So we might need sine theta somewhere in our calculation. We can just input sine theta equal to 0.12 there, right? If we take sine inverse to the other side, it becomes sine. So sine inverse, जब उधर जाएगा तो बन जाएगा sin theta equals 0.1/2. ये आपको अगर sin theta कहीं पे use करना पड़े, this is what you would do in that case. Now let's try to represent the situation in a rough sketch that will help us understand this better. So we have this inclined plane, and the angle that this plane is making with the horizontal
is given here. Let's say that's theta. All right, so this is what the situation looks like. A car of mass 900 kg is moving up the hill. So there's a car. Now, my drawing is not very good, so I'll just draw the car as a box. So we have this car, and it's moving up the hill. Its mass is 900 kilograms. That means the weight of this car is 9,000 Newton. That's acting vertically downwards. Initial speed of the car is 11 meters per second. After 12 seconds, the car has traveled 150 meters up the hill and has speed 16 meters per second. Okay, so ये यहाँ पे थी, let's say. कार उसके बाद इसने ऊपर मूव करना शुरू किया. It moved a distance of 150 meters. This distance was 150 meters, such that it reached this point. और उस पॉइंट पे जाके उसकी जो स्पीड थी वो कितनी हो गई? 16 meters per second. और initially इसकी स्पीड कितनी थी? 11 meters per second. So we know the initial speed, the final speed, ये information हमें पता है. The engine of the car is working at a constant rate of 24 kilowatts. So power is constant, and that's constant at 24 kilowatt. So you can say power equals 24,000 watt. That is what we have for power here. Okay. अच्छा, अब देखिए हम क्या करेंगे. उसने कहा find the work done against the resistive forces during the 12 seconds. How do you figure this out? The first thing that you should keep in mind is यहाँ पे Newton's second law of motion नहीं apply हो सकता. Please don't do that. Resultant force equals mass into acceleration, या forward minus backwards equals mass into acceleration. That is not applicable here. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम acceleration नहीं निकाल सकते. Acceleration हम यहाँ से नहीं figure out कर सकते. Instantaneous acceleration के लिए तो हो सकता है, लेकिन आपको अगर इस पूरी जर्नी की acceleration चाहिए, you cannot do 16 minus 11 over 12 to find acceleration here, because आपको नहीं पता कि acceleration constant है यहाँ पे. उसने नहीं कुछ बताया हुआ आपको. So Newton's second law से आप ये question नहीं कर सकते. अगर उसने बताया होता है, कुछ problems होते हैं जो आप उससे भी कर सकते हैं, work energy वाले power वाले method से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको sure होना चाहिए कि जो acceleration है that is constant. सिर्फ तब आप वो use करेंगे दूसरा वाला method. Otherwise आप RF equals ma या forward minus backward equals mass into acceleration वो नहीं use करेंगे. So इस case के अंदर you can only use the energy method. Okay. Now how do we use that? We have one point here जहाँ से उसने start किया and it reached this point जहाँ पे इन दोनों points के ऊपर हमें speed पता है उसकी. We are looking for work done against resistance. Now, remember where that comes from. हमारे पास एक identity होती है work energy principle, where we have work done against resistance. यहाँ पे आपको speeds भी पता है, आपको change in kinetic energy भी मिल सकता है, आप height भी निकाल सकते हैं, because you know the angle here is theta. अगर आपको hypotenuse यहाँ पे पता है 150, तो आप vertical height तो निकाल सकते हैं उससे. Change in height ये भी figure out कर सकते हैं उससे. आपका potential change in potential energy भी आ जाएगा. तो आप identity अगर use कर लें, which identity? Work done by the driving force, that is equal to change in kinetic energy plus the change in potential energy plus the work done against resistance. What we are looking for is this thing, work done against resistance. ये आपको figure out करना है. ठीक है, work done against resistance figure out करना है. Now, change in kinetic energy और change in potential energy तो हमारे पास आ जाएंगे from the information that's given. What about the work done by the driving force? That's not given in the question, but we are given the power that the car is working at, and it's a constant power. So throughout same power है,
और उसने आपको टाइम बताया हुआ है, कितना टाइम है, 12 सेकेंड्स लग रहे हैं इस जर्नी में, टाइम इज 12 सेकेंड्स। तो आप वर्क डन निकाल सकते हैं इससे। रिमेंबर पावर इक्वल्स या वर्क डन, I'm sorry, I'm getting a call. Just check this. Okay, sorry about that. अच्छा, पावर आपको दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स फिगर आउट करना है। पावर, टाइम और वर्क को कौन सी इक्वेशन कनेक्ट करती है? यू हैव दिस फॉर्मूला, पावर इक्वल्स वर्क डन ओवर टाइम, राइट? इससे आप क्या कर सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं। इसमें आप क्या इनपुट करें, पावर की वैल्यू 24,000 इनपुट कर दें, दैट इक्वल्स W। रिमेंबर दिस W इज डिफरेंट फ्रॉम दिस W। W ये ऊपर वाला वॉट है और नीचे ये वर्क डन है। वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टाइम विच इज 12। यहाँ से आपके पास वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स आ जाएगा 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। लेट्स सी व्हाट दिस टर्न्स आउट टू बी। शायान, वी कैन नॉट यूज दैट, ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी हम नहीं यूज कर सकते, बिकॉज आपकी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना। तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स आपको उससे तो नहीं मिलेगा। अगर तो कांस्टेंट वेलोसिटी होती तो उससे आप यूज कर सकते थे, यहाँ से नहीं आपके पास आ सकता वो, क्योंकि हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। आपको थ्रू आउट निकालना है वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स। दैट्स 24,000 multiplied by 12. Let's see what this turns out to be. This is 288,000. This is the work done that we get from this. आपको सिंपली अब क्या करना है, इस फॉर्मूला में वैल्यूज इनपुट करनी है। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज 288,000. व्हाट अबाउट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका हमारे पास ये फॉर्मूला भी होता था डायरेक्ट, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जस्ट यूज दैट। मास कितना है इसका? कार्स मास इज 900, half into m into v square minus u square. Final speed is 16, so that's 16 squared minus 11 squared. That is going to give you change in kinetic energy. ये part हो गया. What about the change in potential energy? That's mg delta h, right? ये change in kinetic energy है। change in potential energy के लिए हम क्या करते हैं, mg into change in height. Mass कितना है, 900 into g, which is just 10. चेंज इन हाइट, हाइट कितनी आपके पास आ रही है? लेट्स कॉल दिस h। आपके पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को क्या कनेक्ट करता है? साइन हाइट h over 150, that equals साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा देखिए आपको ऊपर पता था 0.12, you can input that here and you get h equal to 150 into 0.12. Let's see what that gives us. 150 into 0.12, this is giving me 18. तो height की वैल्यू आपके पास 18 आ रही है, change in height, right? Initial height ये थी, जो भी थी initial, हमें उसके पता होना जरूरी नहीं है। नीचे height कितनी थी, बस change in height आपके पास आ गया 18. Just input that here. ये आपके पास change in potential energy भी आ गया। And then you have work done against resistance, वो आपको figure out करना है। इस equation को बस आप सॉल्व कर लेंगे, वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओके, लेट मी जस्ट डू दिस ऑन माय कैलकुलेटर। इसमें आपको सिंपल अरिथमेटिक्स है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर श्योर दैट यू वुड नॉट बी डूइंग एनी केयरलेस एरर्स हियर। लेट्स सी व्हाट दिस टर्न्स आउट टू बी। 288,000 minus 450 into 16 squared minus 11 squared minus 9,000 into 18, and I'm getting 65250 joules from this. This is the work done against resistance that we were looking for. आपने सिर्फ इस आइडेंटिटी के अंदर ये वैल्यूज इनपुट कर दी, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स निकाला, वो इनपुट कर दिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, and you were able to find work done against resistance from that. ठीक है, let's move on, part B.
It says the car then travels along a straight horizontal road. There is a resistance to the motion of the car of this magnitude, 1520 plus 4v, when the speed of the car is v meters per second. The car travels at a constant speed with the engine working at a constant rate of 32 kilowatt. Find the speed. Okay, अब हमें क्या क्या information दी हुई है? हमें दिया हुआ power दी हुई है 32,000 watt. That's one piece of information that we have. And we are given the work done against resistance. Work done against resistance is 1520 plus 4v. अब ये straight road पे travel कर रही है कार, horizontal road पे, ठीक है? Horizontal road पे कार travel कर रही है. अब इस पे देखें कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं. एक फॉरवर्ड फोर्स होगी, दैट्स द ड्राइविंग फोर्स. एक बैकवर्ड फोर्स होगी, दैट्स रेजिस्टेंस. और उसने कहा है कि कार इज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट स्पीड का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो है. तो अगर आप रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन यूज करते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? फॉरवर्ड फोर्स इज ड्राइविंग फोर्स, बैकवर्ड फोर्स इज दिस रेजिस्टेंस व्हिच इज 1520 प्लस 4v. राइट साइड पे क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, राइट साइड पे जीरो आ जाएगा. एंड ड्राइविंग फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस. आई एम सॉरी, मैंने WR लिख दिया. दिस इज एक्चुअली R, रेजिस्टेंस की वैल्यू है. ठीक है, इट्स नॉट वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, इट्स जस्ट रेजिस्टेंस. 1520 प्लस 4v. अच्छा, तो ड्राइविंग फोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल होगी यहाँ पे क्योंकि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है. ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो है, so this is equal. Now what do we get from this? ये आपके पास ड्राइविंग फोर्स आ गई. ड्राइविंग फोर्स है, पावर है, आपको वेलोसिटी निकालनी है. आप पावर और वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज कर लें. पावर इक्वल्स ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी. जस्ट इनपुट वैल्यूज देयर. पावर इज 32,000 equals driving force, which is 1520 plus 4v whole multiplied by v. यहां से आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी. ये देख लें क्या आता है. 1520v plus 4v square equals 32,000. We could simplify this, I think. Yeah, so it becomes 4 से डिवाइड कर लें पूरी इक्वेशन को. हमारे पास आ जाएगा v square plus 1520 over 4. That is 380. 32,000 divided by 4, that's 8,000. This is the equation that we have. It's a quadratic equation. इसमें factorization करने का आप सोचेंगे तो टाइम लग सकता है, but it's pretty quick actually, क्योंकि आपको नजर आ रहा है 420 work in this case. 400v minus 20v minus 8,000 equals 0. Otherwise आप quadratic formula में values input करें और फिर आंसर लिख दें. इसके factors क्या हो जाएंगे? v plus 400 and v minus 20. This equals 0. So v equals minus 400 or v equals 20 in this case. ये हमारे पास ये दो possible values आ रही हैं v की. तो इसमें सिर्फ 20 आप यूज करेंगे, 400 नहीं यूज करेंगे, बिकॉज आपने एज्यूम किया है कि ये एक डायरेक्शन में जा रहा है. तो जो भी डायरेक्शन में आपकी कार जा रही है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम कर रहे हैं. तो आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करनी है. द अदर वैल्यू इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड बिकॉज दैट्स टेलिंग यू दैट it's moving in the opposite direction, which does not make sense because we started with this assumption that it's moving in one direction और वही डायरेक्शन पॉजिटिव है. तो उसी डायरेक्शन में जो स्पीड आ रही है आपने उसी को कंसिडर करना है. v is equal to 20 in this case. ओके. अच्छा, एवरेज वेलोसिटी नहीं अप्लाई होगी शायान. एवरेज वेलोसिटी उस पे फर्स्ट पार्ट में नहीं यूज कर सकते बिकॉज द प्रॉब्लम इज it's not, the velocity is not changing at a constant rate. Acceleration constant नहीं है ना, तो average velocity यहाँ पे उसका फायदा नहीं होगा. That's not going to work. Okay, that was part B of this. We are again running out of time, so we need to be a bit quick and do this last question. There's a particle P that moves in a straight line. The velocity v at time t seconds is given by
these two equations, we need to show that there is an instantaneous change in the acceleration of the particle at t equals 10. Instantaneous change का मतलब है एकदम जो है वो time equals 10 के ऊपर acceleration change हो जाती है, यानी कि first equation से आपको जो acceleration मिलती है वो different है और second equation से acceleration मिलती है वो different है. That's what you have to prove. Okay. Now, how do you do that? You have velocity equations given. The first velocity equation is 0.5 times t, and the second one is 0.25 t squared minus 8t plus 60. Velocity से acceleration पे आप कैसे जाते हैं? आप differentiate करते हैं, derivative find करते हैं, ठीक है? So that's what we do here. इसको differentiate कर लें, उससे आपके पास acceleration आ जाएगी. Acceleration equals 0.5 for part 1 from the first equation. Second equation से आपके पास acceleration क्या आती है? Let's differentiate it. That gives you 0.25 into 2, which is 0.5 times t minus 8. This is the value of acceleration. आप क्या करेंगे अब इसके अंदर? Time की value 10 input कर दें. देखें इस पे आपको acceleration क्या मिलती है? Acceleration equals 0.5 into 10 minus 8, and that gives me 5 minus 8, which is minus 3. Second equation से time equals 10 के ऊपर आपको minus 3 acceleration मिल रही है. So this is a negative acceleration. दोनों different है, तो बस आपने show कर दिया कि there is a change. It's going from 0.5 to minus 3. All right. Okay, so the first equation से हमें मिल रहा है कि time equals 10 पे acceleration क्या थी? 0.5, और second equation से मिल रहा है time equals 10 पे acceleration क्या है? A equals minus 3. इसका मतलब क्या है कि एकदम से आपने शायद brakes apply कर दिए हैं, इसकी वजह से वो negative हो गई, acceleration negative आ गई आपके पास, ठीक है? Let's move on. Part B of this. It says find the total distance covered by P in the interval 0 to 20. 0 to 20 में आपने total distance covered निकालना है इस particle के लिए. Now, how do we figure this out? Displacement की equations निकालेंगे और उनमें limits input कर देंगे 0 से 10 और 10 से 20. But you have to be a bit careful in problems like these. Remember, आपको देखना होता है particle की direction तो नहीं change हो रही कहीं पे. That's an important thing to consider. Particle की direction change आप कैसे figure out करते हैं? Velocity को 0 input कर देते हैं, उससे आपको पता चलता है कि acceleration, particle की direction कहीं change तो नहीं हो रही है. Let me write those two equations down here. Part 1, which is time 0 to 10 seconds, and part 2, which is time 10 to 20 seconds. We have these two equations for velocity. 0.5 t is the first one, and the second one is 0.25 t squared minus 8t plus 60. ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है. आप सबसे पहले क्या करें, देख लें कहीं पे डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही इस इंटरवल के अंदर, क्योंकि फिर आपको उस पॉइंट पे भी ब्रेक करना पड़ेगा अपनी डिस्प्लेसमेंट फिगर आउट करते हुए. फर्स्ट में वेलोसिटी को 0 इनपुट करते हैं तो क्या आता है आपके पास? टाइम की वैल्यू 0 आती है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. 0 पे ही डायरेक्शन चेंज है, 0 10 के दरमियान में कहीं पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, सो दैट्स नॉट एन इशू. ओके, so we are fine with the first equation. Second equation में अगर आप velocity की value 0 input करते हैं, उससे देखते हैं हमें क्या मिलता है. 0 equals 0.25 t squared minus 8t plus 60. Let's solve this equation and find what values of t we get from this. T equals minus into minus 8 plus minus square root of minus 8 whole squared minus 4 into 0.25 into 60 whole divided by 0.25 multiplied by 2. ये आप सॉल्व करके देखें t की वैल्यूज आपके पास क्या आती हैं इससे. अच्छा, let me do that. Can somebody confirm this as well in the chat box? I'm doing this on my own as well. So this turns out to be 0.25 minus 8, 60. Okay, I'm getting 20 from this,
and 12. Okay, so there are two values that we get from this. T equals 20 and T equals 12. अब 20 का तो मसला नहीं है बिकॉज वो तो तब तक तो आपका वो जो आपकी जर्नी खत्म ही हो गया, सो वी डोंट केयर अबाउट दैट. बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. T इक्वल्स 12 के ऊपर ये पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है. ठीक है, अब इसका मतलब है कि आपको अपनी जर्नी को इस पॉइंट पे भी ब्रेक करना पड़ेगा. तो आपके पास तीन रीजन्स बन जाएंगे. अब 0 से 10 तक फर्स्ट इक्वेशन आ गई, 10 से लेकर 12 तक सेकंड इक्वेशन से आप निकालेंगे, और फिर 12 से लेकर 20 तक अलग से निकालेंगे. ठीक है, सो वी हैव थ्री डिफरेंट रीजन्स नाउ फ्रॉम फॉर टाइम. एक तो 0 से लेकर 10 तक, देन यू हैव 10 to 12 बिकॉज 12 पे आपको जर्नी को ब्रेक करना पड़ेगा, वहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है. एंड देन 12 to 20. व्हाट आर द वेलोसिटी equations? V equals 0.5 t here. दूसरे वाले में हमारे पास है 0.25 t squared. इन दोनों की इनफैक्ट सेम ही है, इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं. 0.25 t square minus 8t plus 6t. इनको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे अब, और इनमें लिमिट्स इनपुट करेंगे. फर्स्ट वाले में देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी. 0.5 t squared over 2. लिमिट्स क्या इनपुट करनी है यहाँ पे, कहां से कहां तक चाहिए, 0 से लेकर 10 तक. कैंसलेशन हो जाती है एंड यू गेट 0.25 फ्रॉम दिस. वैल्यूज इनपुट करके दिखाएंगे. 0.25 into 10 squared minus 0.25 into 0 squared, and this gives us 100 into 0.25 which is 25. ये आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया in the first part of the journey. ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल पूछा तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, 25 meters. 0 से 10 तक कोई डायरेक्शन चेंज नहीं था, तो ये आपके पास 25 meters डायरेक्टली यहाँ से आ रहा होगा. Now let's look at the second and third parts of the journey. मैं इसको यहाँ पे साइड पे कर रहा हूँ, उसने आपको एडिशनल पेज पे दिया हुआ है, आप नेक्स्ट पेज पे भी जाके कर सकते हैं. I'm doing this on the side here. 10 से 20 and 12 to 10 से 12 and 12 to 20. Okay, let's integrate this. That gives me 0.25 t cube over 3. In fact, let me just do a 10 to 12 here. 12 to 16 next page पे कर लेते हैं. It's going to be a lot of clutter otherwise. 0.25 t cube over 3 minus 8t squared over 2 plus 60t. ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया. इसमें प्लस सी करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपको वैल्यू चाहिए फ्रॉम 10 to 12. इसमें आप लिमिट्स इनपुट कर दें 10 to 12 and see what that gives you. ये वर्किंग आपको दिखानी पड़ेगी. इसमें आप 12 इनपुट कर दें एक दफा. 0.25 into 12 cube divided by 3 minus 4 into 12 squared plus 60 into 12. Subtract from that 0.25 into 10 cube divided by 3 minus, bracket आना चाहिए यहाँ पे. Subtract from this case when you input 10 there. 0.25 into 10 cube over 3 minus 4. Cancellation कर लेते हैं यहाँ पे. 4 into 10 squared plus 60 into 4. ये evaluate कर लें बेशक कैलकुलेटर से डायरेक्टली, और आप देखें आपके पास इससे क्या आता है. 0.25 into 12 cube divided by 3 minus 4 into 12 squared plus 60 into 12. This is giving me 288 first of all. Subtract from this that second case, 0.25 into 1000 divided by 3 minus 400 plus 60 into 4. And that turns out to be minus 76.67 for me. Just confirm this. 0.25 into 10 cube, that's fine, divided by 3
minus 40 square, so that's 4 into 100 plus 60 into 4. Okay, so I'm getting minus 230 over 4 over 3 from this. Okay, so what does this give us? 288 minus this. This is okay. I think I'm doing some error somewhere. 288 minus this. This is fine. There's some calculation error, I think, somewhere. Can somebody confirm what these values turn out to be? The 288 seems to be fine. I'm going to subtract that and just input that here again. And यहाँ पे कुछ miss कर दिया. I think 0.25 is 14 over 3 for both brackets. Okay. Let me try that again. 0.25 into 1000 divided by 3. I think I'm going to divide by 3 miss कर दिया वहाँ पे. Minus 400 plus 60 into 4. That turns out to be fine. 60 को 4 से मैंने क्या कर दिया? Oh, yeah. So thank you for that. Okay, so that's what happens when you try to do this in a hurry. 60 into 10. Thank you for pointing that out. मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया. Let me correct that. If I put 10 there, that gives me 850 over 3. So yeah, so that turns out to be a positive number. That looked weird. Negative आ रहा था पहले. 850 over 3. This is what we get from the second bracket. 288 minus 850 divided by 3. This gives me 14 over 3. Okay, yeah. Thank you, Pakiza. So the final answer turns out to be 14 over 3 from this. So यहाँ पे हमारे पास याद है. Okay, good. ये हमारे पास second part की displacement आ गई, ठीक है? Let's look at the third part now. 12 to 20 seconds. उसमें भी हम क्या करेंगे? ये सेम चीज उठा लें जो आपने इंटीग्रेट कर ली है ऑलरेडी. इसमें बस आपने लिमिट चेंज करनी है. और इनफैक्ट लेट मी जस्ट कॉपी दिस फ्रॉम हियर. ये पूरा का पूरा आपने उठा के दोबारा लिखना है यहाँ पे. और लिमिट्स में इंस्टेड ऑफ यूजिंग 10 to 12 आपने इनपुट कर देना है 12 to 20. ओके, लेट्स डू दैट. 12 की जगह पे 20 डाल देते हैं और 10 की जगह पे 12 डाल देते हैं. So we have 20 here, 20 here, 20 here. We have 12, 12 and 12. ठीक है. सेकेंड ब्रैकेट का रिजल्ट तो आपको ऑलरेडी पता है, आपने ऊपर निकाला है. दिस वाज 288. फर्स्ट का हम देख लेते हैं. 0.25 into 20 cube divided by 3 minus 4 into 20 squared plus 60 into 20. That is giving me 800 over 3. So the first bracket gives us 800 over 3, and this part gives us 25 over 27. No, I'm sorry, this is wrong. 800 मैंने divide कर दिया इसको. Minus 288. This is minus 64 over 3. अच्छा देखें यहाँ पे नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता हमें. डिस्प्लेसमेंट ये लेफ्ट साइड के ऊपर है इस पॉइंट में. अगर हम राइट साइड पॉजिटिव अज्यूम करें, माइनस 64 over 3 का मतलब है कि हम लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं. बट वी आर लुकिंग एट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. तो हमने इसको नेगेटिव को नहीं कंसिडर करना. हमने कहना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इस पार्ट में, वो तो फिर भी 64 over 3 होगा. दैट्स द होल पॉइंट ऑफ कैलकुलेटिंग दिस सेपरेटली, बिकॉज हमें पता है 12 के ऊपर जाकर ना डायरेक्शन चेंज हो रही है. 10 to 12 वो एक साइड पे जा रहा है और 12 to 20 दूसरी साइड पे जा रहा है. तो इसको इकट्ठा नहीं कर सकते इसलिए, बिकॉज एक पार्ट में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, दूसरे पार्ट में नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है. तो हमने अलग अलग करके इनको पॉजिटिव करना है पहले, फिर ऐड कर लेना है. अब इन
तीनों डिस्टेंसेस को ऐड कर लें, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमारे पास क्या जाता है 25 from here, then we have 14/3 from here, and then we have 64/3 from here. We add all of these values and see what we get from that. 25 plus 14/3 plus 64/3, and see what that gives us. 25 plus 78 divided by 3, that gives us 51, and that is the total distance traveled that we were looking for. All right, so that's it. This was the last one. This was the last question from this paper, and that completes our M1. Tomorrow we start, we will be doing an S1, and I'll be doing paper 4.2. Okay, paper 4.2 tomorrow of S1. That's the plan for tomorrow. And then after tomorrow, जो हमने papers नहीं किए इस session से, उनके हम specific questions करेंगे जो थोड़े से ज्यादा मुश्किल है. ठीक है, so paper 3 के 2 variants हमने नहीं किए, उनके हम कुछ questions कर रहे होंगे. paper 1 के 2 variants हमने नहीं किए, उनके हम कुछ selected questions कर रहे होंगे. ठीक है, ये हम कल करेंगे इंशाल्लाह. अच्छा मिस्टर, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा हो ना तो फिर आपको डायरेक्शन चेंज का करने की जरूरत नहीं है. फिर आप बस 0 to 10 अलग से आप लगा देंगे और 10 to 20 आप अलग से लगा देंगे. वो इक्वेशन तो डिफरेंट है, दोनों की डिस्प्लेसमेंट तो अलग अलग निकालनी पड़ेंगी आपको, लेकिन आपको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है. फिर आपको डायरेक्शन चेंज निकालने की जरूरत नहीं है, आपको डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्टली मिल जाएगी. ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल के लिए, और मोस्टली उसने डिस्टेंस ही पूछा होता है, उसके लिए आपको वेलोसिटी 0 के इक्वेट करके फिगर आउट करना होता है कि कहीं पे डायरेक्शन चेंज तो नहीं हुई, तो वो आपको चेक करना पड़ता है. ठीक है, आई होप दैट वाज हेल्पफुल. आई विल सी यू अगेन tomorrow. You're welcome, Pakiza. I'll see you all again tomorrow. Tomorrow we'll be doing S1 paper 4.2 May June 2022 inshallah. All right, Allah Hafiz.